औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? आज की हमारी वीडियो है टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेरिक। तो चलो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रोफाइल। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ अ टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट होती है टेम्परेचर की डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्थ है। It is governed by many factors including incoming solar radiation, humidity, and altitude. Altitude many lengthy when discussing surface temperature. The annual atmospheric temperature range at any geographical location depends upon the type of biome. There are several ways of classifying in the different layers of the atmosphere. The most common classification is based on the vertical distribution and variation of temperature in the atmosphere. In this classification, from the lowest layer to the highest layer are respectively the troposphere, the stratosphere, and the mesosphere, and finally the thermosphere. The thickness and the boundary of each layer are not identical throughout the globe but vary in different time and places. चलिए जी दोस्तों, ये एक ग्राफ है हमारे सामने। इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर और हाइट किलोमीटर के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो 0 से 20 तक है, उसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आता है, और 20 से तकरीबन 50 तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आता है, और 50 से 80 तक हमारे पास आता है मेसोस्फेयर, उससे हमारे पास ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। तो एक एक को डिस्कस कर रहे थे। द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 12 किलोमीटर थिक ऑन एवरेज। इट इज़ थिकर इन समर दैन इन विंटर। द ट्रोपोस्फेयर ओवर लो एल्टीट्यूड रीजन इज यूजुअली थिकर दैन ओवर हाई एल्टीट्यूड। यानी हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसकी रेंज 12 किलोमीटर होती है एवरेज, ते और ये थिकर होता है समर दैन विंटर में ज़्यादा थिकनर होता है। द ट्रोपोस्फेयर ओवर द इक्वेटर इज़ अबाउट 80 किलोमीटर थिक वाइल इट्स थिकनेस इन द रीजन नियरेस्ट द टू पोल्स इज़ ओनली अबाउट 8 to 9 किलोमीटर, और 8 to 9 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर यूजुअली डिक्रीज विद हाइट एट द एवरेज लैप रेट ऑफ 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। यानी इसकी हर लैप्स रेट में 6.5 किलोमीटर टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता है। आगे क्या है स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द 10 किलोमीटर टू 55 किलोमीटर अबव ग्राउंड। ये 10 किलोमीटर 55 किलोमीटर अबव ग्राउंड होता है विद इन द लो पार्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर टू अबाउट 30 to 5 किलोमीटर। द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट, यानी 30 to 5 किलोमीटर तक इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इंक्रीज स्लाइटली विद हाइट, और इंक्रीज करता है विद हाइट के साथ स्लाइटली। Above 35 kilometers, the temperature actually increase with height at the average rate of 5 किलोमीटर, और तकरीबन टेम्परेचर 5 किलोमीटर की रेंज से इसमें बढ़ता है। Since almost no dust or water vapor from the land surface will reach the stratosphere, the airflow in this layer is steady. The upper part of the stratosphere experiences an increase of temperature due to fact that the sun ultraviolet radiation absorbed by the ozone layer। यानी इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओजोन लेयर होती है और वो रेडिएशन को जज़ब करती है। The region of the mesosphere is about 50 to 18 kilometers in altitude, जो mesosphere 8 to 5 kilometer altitude होता है। The temperature in this layer usually decrease at the height increase up to up of the mesosphere where the temperature can be below। यहाँ पर टेम्परेचर -90 सेंटीग्रेड इवन बिलो हो जाता है। The composition of gas in the atmosphere from the ground to the mesosphere almost standing except for water vapor and so on। आगे क्या, the thermosphere is the region above the top of a mesosphere where the temperature begins to rise again when sun activity is low। This layer can extend to 40 kilometers in altitude during high activity period। The layer can reach around 50 kilometers in altitude। The air in the lower region of the temperature is extremely thin। इसकी वजह से हमारे यानी ये 4 to 50 किलोमीटर हमारे पास होता है अबव। और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ, और प्रेशर फाइव इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।